Yes, this is the last question of this chapter. Height and distance. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary prove that the height of the tower is 6 meter. It is important question and different and important for examination point of view. In Hindi, for Hindi medium students, the angle of elevation top of the tower, ये टॉप ऑफ द टावर है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 4 मीटर एंड base from the base of the tower, the base of the tower is 4 meter and this is 9 meter. That means ये total, this is 4 meter and this is total 9 meter from here to here. Base of the tower 9 meter or and in the same straight line with it are complementary. Now you know the complementary are those angles, two angles whose addition is 90 degree. दो कोणों का योग जो 90 डिग्री का हो जाता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है और 180 का होता है तो सप्लीमेंट्री होता है. यू मस्ट नो, यू नो दिस. सो अगर हम ये थीटा माने तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दोनों का एडिशन 90 होगा. और अगर इससे थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा. दैट इज these two angles are complementary in this case. So ABCD. Now in triangle ABC, what you get? Tan theta equal, let this is H by means you can say AB upon BC, that means H by 4. मान लिया let height of tower be H meter. Then therefore H equal cross multiplying 4 tan theta. First equation in triangle ABD, what you get? Tan 90 degree, tan 90 minus theta equal AB by BD, that means H by 9. You know, I have already explained about this. Tan 90 minus theta equal what? Cot theta. H by 90 multiplying H equal 9 cot theta. This is second equation. From 1 and 2, what you get? H equal this and H equal this, that means both right side are equal. That means from 1 and 2, what we get? 4 tan theta equal 9 cot theta. 4 tan थीटा. अब cot थीटा को tan थीटा में चेंज कर देते हैं. सिमिलर एक तरह का 1 बाई
tan theta, you know, multiplicative inverse of cot theta equal tan theta, that means 1 by tan theta. That means cross multiplying tan square theta equal 9 by 4. Therefore tan theta equal 3 by 2. Now from equation 1, tan theta equal equation 1, from equation 1 what you get, h equal 4 tan theta. That means 4 into tan theta की वैल्यू ये थर्ड से डाल देते हैं, 4 into 3 by 2 फ्रॉम थर्ड, 3 से. दैट मीन्स एक कर देंगे, यानी 6 मीटर, मीटर में है, मीटर होगा. I have got it. It was to prove that the height of the tower is 6 meter. I have given the concept. Is important question. I have given the concept of complementary angle. Try to solve these questions at home and got benefited in this lockdown, because it is going on too much lengthier, longer, and all the institutions are closed. So try to solve these questions at home. अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा. और इन क्वेश्चंस को अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो जस्ट आस्क मी फॉर दिस. एंड उन बच्चों को शेयर भी करें जो आपके नेबर्स में है, आपके फ्रेंड सर्किल में है, और उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें जो गरीब तत्व के लोग जो गांव में हैं, दूर दराज में हैं और इस लॉकडाउन से प्रभावित है ज़्यादा, वो भी अपने करियर के मुकाम पर पहुंचा सकें. ओके, थैंक यू. जय हिंद.